अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई-बिल्ड पाकिस्तान। मैं नसीम अहमद जावा आपके साथ हूँ। इंसान मुख्तलिफ अदवार में से गुज़र के टेक्नोलॉजी के दौर तक पहुँचा है और जो टेक्नोलॉजी का दौर है वो काफ़ी अरसे से इन है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस जो पिछले 1 डेढ़ साल में हुए कोविड के, उसमें हर बंदा इस दौर में बाय फ़ोर्स एंटर हो गया। टेक्नोलॉजी हर दौर में रही है और किसी न किसी शक्ल में इंसान के लिए सहूलतें पैदा करती रही है। जो भी दौर आया वो सिविलाइज़ेशन का था, वो इंजीनियरिंग का था, वो किसी भी तरह से वो इंसान की सहूलत के लिए था, इंसान को कम्फ़र्ट करने के लिए था। इसी तरह टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये होता रहा। टेक्नोलॉजी के भी अदवार आए, लेकिन पिछले 2 साल से डिजिटलाइज़ेशन ने जो लाइफ़ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। जो पहली चेंज आती थी, वो दुनिया की किसी डेवलप्ड कंट्री से शुरू होती थी और दूसरी जगह जाते-जाते इट इट टूक सम टाइम। लेकिन जो डिजिटलाइज़ेशन है, टेक्नोलॉजी है, देखिए अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये लाइव जा रही है, तो ये इट डज़ नॉट टेक टाइम। अगर आज दुनिया के किसी कोने में कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, तो वो चंद ही घंटों में, चंद ही दिनों में दुनिया के दूसरे कोने में पहुँच जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया वो फिनटेक का है। फिनटेक बहुत पॉपुलर है फॉर सो मेनी इयर्स, बट इसका बेसिक जो वर्ड है वो फाइनेंशियल से निकला है और टेक टेक्नोलॉजी से निकला है, सो इट्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट हैं, आदिल नसीम, जो इस फील्ड से हैं। तो हम लोग आदिल से फिनटेक के बारे में और फिनटेक का रोल इन ई-कॉमर्स के लिए हम लोग बात करेंगे। लेट्स गो टू आदिल। लिख सकते हैं कि वेलकम बैक आदिल, वी कम बैक टू यू। सॉरी, आप मेरा आई एम श्योर यू आर हैविंग बिग ट्रबल विद योर इंटरनेट, बट व्हाट टू डू? I'm not sure what's going on. Thank you so much for inviting me over, and thank you so much for having me. I'm not sure that what's really going on with the internet because I've tried switching a couple of internet connections right now. So थोड़ा सा मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या होगा इंटरनेट के साथ. But anyways, let's try to summarize. Something about yourself and about your company would be wonderful, and then please shed some light on fintech and e-com. Sure. Well, we should have these podcasts quite often for the awareness purposes. So I'm really excited to actually go ahead and explain more about what fintech is, what PostEx do, and a little bit about my background. So, well, to start it off, that I have been throughout my career, I have been working in different domains, in sales, in business development, and customer service, customer experience, corporate relations. So I have a very huge past experience in these fields, and the common thing is that these all are very client centric. And I have been working in a very client-centric environment because I'm an ex-Kareem. I've been working in corporate relations in Kareem. So I would say that experience that I had with the passage of time, that I learned the skills and gained the knowledge that needs to be used somewhere very efficiently. And there wouldn't really be a better place than using it in your own startup, which is PostEx, because PostEx itself is a very client-centric startup. So if I talk about PostEx, so since you're in the e-commerce industry, and you would agree with me that Pakistan is a very much cash-intensive market, and 90 to 95% of the transactions are being done on cash on delivery in e-commerce industry. So usme we saw a very great opportunity that where we can work and digitalize these transactions. So यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा एक challenge we have seen in Pakistan in e-commerce industry, जो इनके cash flow का एक बहुत बड़ा issue है between the communication between e-commerce and the courier companies. So जितने भी आपके cash on delivery के orders होते हैं, उसकी transactions around like
10 to 15 days के बाद you recover the money from you get the money back from the courier companies, which is really affecting the growth of e-commerce industry in Pakistan. So we eventually came up with the idea that will solve this problem by paying all the e-commerce industry, whoever works with us, like whoever is working with us and whoever will be working with us, will solve this problem eventually throughout the industry. के हम लोग will pay them upfront for all of their cash on delivery orders. So now if we talk about के जहाँ पे जो gap है, that is not only restricted to cash flow, that is also maintaining the inventory for SMEs. SMEs, जो small medium sized businesses हैं, they cannot really afford. But by the way, am I audible? Am I audible? Just wanted to make sure that if you guys can hear me, if everything is. But Keep going. okay, perfect. So just wanted to make sure that I haven't lost anything. So where PostEx actually comes in is कि पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स के अंदर गैप हम लोगों ने देखा, जो कि कैश फ्लो का एक बहुत बड़ा इशू था, getting their payments back in 10 to 15 days. So I would say large size businesses would be able to survive in this situation, but जो small and medium sized businesses हैं, they're very much constrained with the cash. So we came up with a solution that will pay all the money for all their COD orders upfront, so they can actually grow, and that is really impacting very positively in their growth, and so they can actually compete with the larger players. So because Pakistan में e-commerce market है, that we know कि Pakistan में e-commerce market है, and it's very huge potential market. But जहाँ पे cash की बात होती है, and again it's very cash intensive market, और वहाँ पे mostly problems जो आते हैं वो यही होता है कि आप inventory इतनी maintain नहीं कर सकते क्योंकि आपको cash आपको नहीं मिल रहा होता timely. So we jumped in and we make sure that we resolve that problem for them. And secondly, we also helping e-commerce to enable their customers to pay upfront, to pay through debit or credit cards. So what we do is we also help them digitalize their payments too. So this is currently what PostEx is doing. This is the current challenge that we have in e-commerce industry, and this is how it's impacting the services. जो है वो एक बड़ा इशू जो है लोगों का, जो कैश ऑन डिलीवरी ई कॉम का काम कर रहे हैं, तो पोस्टएक्स ने क्या किया, they offered a service which is a solution. Actually this is again fintech, part of fintech or kind of fintech, कि आपने फाइनेंशियल सर्विस दी all those people जो स्मॉल मीडियम लार्ज कंपनीज हैं, उनकी सबसे बड़ी जो कैश की इशू होती है, क्योंकि फिनटेक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्टअप क्राउड फंडिंग और क्लाउड फंडिंग के लिए है. दिस इज एक्चुअली यूज्ड बाय स्टार्टअप्स. So you being startup, us being startup, and there are many others in Pakistan, आपने उनका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया कि भाई आप कैश ऑन डिलीवरी के जितने ऑर्डर्स हैं आप हमसे 70% कैश ले लें, ये हमारा प्रॉब्लम है, हम कलेक्ट करके आपको जो भी अकाउंट सेटल करेंगे. इज दैट करेक्ट? Yes, to some extent, yes, that is correct. So what we do is we pay them upfront. हम उनको एडवांस में उनके जितने भी COD orders होते हैं हम उनको एडवांस में पे करते हैं. और other than that, we also help them digitalize their payments too by providing them the payment gateways. आदिल, आपकी जो PostEx की सर्विस है वो अभी किन शहरों में अवेलेबल है? So we are currently working in Lahore, Islamabad, Rawalpindi, and Karachi. ओके. और आपका जो टारगेट है अभी आज के दिन में, डू यू थिंक दैट कि ये सर्विस ऑफर करने से आपके बिजनेस में ग्रोथ आई है एंड यू हैव हेल्प पीपल टू ग्रो देम? मुझे जरा एग्जांपल्स के साथ बताएं कि कितनी % ग्रोथ आई है जस्ट बाय ऑफरिंग देम दिस सोल्यूशन. पेमेंट जो आप देते हैं लोगों को COD की अपफ्रंट, प्लस दूसरे और अदर साइड कितना उनके लिए आसानियां हुई हैं? Sure.
Sure. So currently we are working with a great number of clients, and we are working with small and medium sized businesses and also the large sized businesses. के large sized businesses में majorly ये है कि we help them sustain their businesses because they're already large sized businesses. So and secondly, just small medium sized businesses, we help them compete with the large scale businesses. So currently, in terms of the numbers, if we talk about, so let's say if I give you an example कि जहाँ पे हमने किसी के साथ start किया एक merchant के साथ he has like maybe 5 parcels a day, okay, but they couldn't actually grow their business with the time क्योंकि cash flow उतना अच्छा नहीं है. They get twice a month, they get paid twice a month, so they can they cannot use their cash like every day. जहाँ पे वो मार्केट कर सकें, जहाँ पे अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकें, जहाँ पे वो अपनी सेल्स को बेहतर कर सकें. So by getting those cash upfront, now they are working on like 25 to 30 orders a day. So that's almost like 200 to 300 growth for them, 200 to 300% growth for them, and so is for us. So the growth for us is very much connected with our clients. Because as I said कि हम लोग बहुत client centric हमारा environment है कि जहाँ पे हमारी देखें, we don't sell a product. So what we're doing is we're selling services. So services जब आप बेच रहे हैं तो आपकी growth in parallel जो है वो associated होती है आपके clients के साथ. जब आपके clients grow करते हैं तभी आप grow कर सकते हैं. So yeah, please. आदिल, आपने जैसे अभी डिस्कस किया, आपने बताया कि हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स सक्सेस एंड सर्टेनली व्हेन दे ग्रो यू ग्रो. मुझे कोई एग्जांपल्स देंगे और कोई फिनटेक सॉल्यूशंस जो ऐसे हों पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स के लिए हों, who are encouraging startups and helping them to grow? Sure. So fintech, if we talk about fintech, fintech is basically a financial technology. Technology which brings innovation into financial sector. जहाँ पे अगर if I talk about a very simple example of fintech, so fintech, let's say we used to go to the banks and I I'm think not sure. Adil, yeah, you are Adil. Now you are back. Please continue. Okay, so हम लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग प्रीवियसली हम लोग बैंक्स में जाते थे, अपने चेक को कैश करवाते थे, we get the money and then again we same as deposit the money, we go to the bank or बड़ा इशू हम लोग अब मोबाइल बैंकिंग करते हैं, हम लोग अपनी मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, तो दैट्स अ फिनटेक. So anything which is helping the customer digitalizing their payments is fintech. So so everything. So अगर पाकिस्तान में हम लोग अगर बात करते हैं तो they are very great players who really revolutionized the market, the industry, like Easy Pesa. We have Jazz Cash by providing their customers mobile wallets. So they are already revolutionizing this industry with their fintech, with their financial technology. What do you see? But What do PostEx you see financial fintech's future in Pakistan? fintech is the future of Pakistan, I would say, because if looking at the fact, that COVID आ गया, everybody has to stay home. Nobody can really go to the banks and do their day-to-day things in banking. So everything has moved online. Everything has moved online. आप mobile पे बैठे हैं, and if you need money, it's just a click away कि मैं आपको यहाँ से भेज देता हूँ. So e-commerce industry is the next big thing for Pakistan, and in parallel, fintech is another big thing in Pakistan. जो दोनों आपस में बड़ा एक दूसरे को complement करते हैं. So अब complement इस तरह से करते हैं कि we help e-commerce to
enable their customer pay through debit or credit card, and give them different mode of options, a mode of payments. Like आपकी अगर वेबसाइट है, आप जाते हैं, and if you don't feel comfortable paying on cash, आपके पास easy पैसा है, वहां पे आप jazz cash करवा सकते हैं. You can swipe your card while the guys come in to deliver your product. And other than that, आपके पास debit card है, credit card है, peer to peer transfer है. So much we have facilitated, the fintech industry in Pakistan has so much facilitated the customers, that eventually that is helping e-commerce to grow. So there's no, I would say there's no excuse left for shopping now. राइट, नो आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली एग्री कि जो फिनटेक और ई कॉम है ये जैसे हम कहते हैं लाजम मलजूम है, क्योंकि ई कॉम कैन नॉट ग्रो विद फिनटेक, और फिनटेक में जितनी पेमेंट ऑप्शंस, जो जितनी पेमेंट की सिक्योरिटी और इजी होगा लोगों के लिए ख़रीदना, लोग उतना ही मोटिवेट होते हैं. पाकिस्तान बीइंग अ न्यूली बॉर्न मार्केट इज गोइंग टू टेक सम टाइम बिकॉज देयर आर कल्चरल बैरियर्स एज वेल, एंड प्लस हमारा कंट्री की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है. वी हैव अ ग्रेट स्प्रेड ऑफ पाकिस्तान के, बहुत फैला हुआ है. अभी तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक्सेप्टेंस इसकी काफ़ी है, बट हमारी मेजर पॉपुलेशन है हु लिव इन रिमोट एरियाज या छोटे शहरों में, उनको इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो वी हैव ग्रेट पोटेंशियल गोइंग देयर. फिनटेक के अंदर जो है मैंने देखा ई कॉम में आ गया, हमारे यहाँ बैंकिंग में आ गया, बट देयर आर स्टिल मैनी सेक्टर्स लेफ्ट जहाँ पे फिनटेक आया ही नहीं है. So, have you noticed any insurance company? I mean, I have seen couple of them in the market. Other than banks and e-coms or telecom industry, can you refer some examples, Adil, from Pakistan who are actually using fintech right now? Yes. Okay, I guess I got disconnected in between. So yes, can you please repeat your question, Naseem? Adil, I was just saying, like we see fintech as in Pakistan, fintech के मेजर जो अभी यूज है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में है, टेलीकॉम में आ गई है, हम लोग ई कॉम में कोशिश कर रहे हैं, बट यू नो फिनटेक के और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसको इसने डिस्टर्ब किया है. जैसे इंश्योरेंस है, क्लाउड फंडिंग है, उसके अलावा मेजर स्टार्टअप्स के लिए है. तो पाकिस्तान में आप मुझे कुछ और बता सकते हैं इंडस्ट्रीज जहाँ पे फिनटेक इज स्टिल नॉट बीइंग यूज्ड बट देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल, since you have a lot of knowledge on fintech and you have been having a background? I think we are having issues with internet again, and let's see if Adil can join us back. टेक्निकली फिनटेक जो है इंडस्ट्री, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. आई मीन अब अभी आप देखें स्टॉक एक्सचेंज में जब हम लोग पहले स्टॉक्स खरीदते थे, उसके लिए हमें लिटरली वी हैव टू गो एंड बाय स्टॉक्स इन पर्सन. अभी इसकी ऐप अवेलेबल है, आप ऐप पे जाएं, आपको उसके ऊपर ट्रेंड्स भी नजर आते हैं. दुनिया में कहीं भी बैठ के आप स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस कर सकते हैं. और we have Adil back with us. Okay. Perfect. So, see, so I was discussing about the opportunities in Pakistan. So Pakistan is a very big market, a very huge market, and it has a lot of potential in it. Currently, if we talk about fintech. I think we have again issue with Adil's internet. Let's go back to the discussion where we left. We were talking about कि फिनटेक से जो स्टॉक्स और मार्केट्स का रेवोल्यूशन आया, तो अभी यहाँ से बैठ के आप यूसी के पाकिस्तान में बैठ के लोग ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के शेयर्स खरीदते हैं. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन. ये सारी रेवोल्यूशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के थ्रू आई है और इट विल कंटिन्यू इवॉल्विंग अराउंड. हमें ये देखना है कि पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है, हम इससे कितना यूज़ कर सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में. बिकॉज फिनटेक हम चाहें ना चाहें हमारी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है. हम सुबह से शाम तक हर चीज़, हर काम अपना टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं. वो चाहे किसी बिल की पेमेंट हो, चाहे हम लोग किसी से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारा बिजनेस अभी सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है.
तो टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इज टुडेज थिंग, एंड ये एरा है टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान हैज़ टू गो अराउंड इट। हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। पिछले कोई एक साल में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने $200 बिलियन अबव फंड रेज किया है, और बिगेस्ट वाज $85 million बाय सम स्टार्टअप जस्ट फ्यू वीक्स बैक। तो दिस विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। हम लोग चलते हैं और आदिल से एक दफ़ा पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ई कॉम इन पाकिस्तान एंड इफ देयर आर एनी challenges, and then inshallah we will end the program on the same note. Over to Adil. I think we are having issues connecting with Adil. So we'll inshallah invite Adil another time, and we'll continue this session from here onward. Adil has served in multinational companies. He's been part in Kareem as well, and he has worked out of Middle East with one of the leaders in industry. So हम इंशाल्लाह आदिल से कनेक्ट करेंगे, बट फॉर नाउ इट इज़ दैट ई कॉम इज़ गोना ग्रो। पाकिस्तान में हर रोज़ नया कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपके पास भी अगर कोई आइडिया है और आपका जो भी फीडबैक है हमारे बारे में, ईबिल्ड पाकिस्तान के बारे में, इफ़ यू वांट टू सी सम सर्टेन थिंग्स in ebuild Pakistan, how can we improve it, how can we help you grow, how can we help you build your house, how can we improve our outreach, कौन सी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वाली साइड है इसको इवॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं ई कॉम के अंदर, दे आर ऑल ट्रेडिशनल, बहुत कन्वेंशनल टाइप की उनकी बिजनेस ट्रेड है। वो बेशक हार्डवेयर स्टोर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या कंसल्टेंट हो, तो इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट द अडॉप्टेबिलिटी इज़ देयर। वी हैड सीन phenomenal growth in this business, and inshallah we'll get in touch again. Thank you very much. Till next time, Pakistan Zindabad.